In earlier lectures, we learned about various methods of teaching English, and of course, we did one approach also, which is communicative approach. हमने methods के बारे में पढ़ा है, and we also learned about communicative approach of teaching English. Today, we will come to know about various approaches, namely structural approach, linguistic approach, and cooperative learning of English or teaching of English. Listen it carefully and make your notes or assignments as you are making it. Keep revising it also. Okay, first, what is structural approach? Before that, what is structure? Structure means a foundation of something. If you are living in your home, that means there is particular structure. You're inside your home during this pandemic, then that means you are inside your home. अगर आप आजकल अपने घरों के अंदर हो, मतलब एक स्ट्रक्चर के अंदर हो, कोविड है आजकल चला हुआ, वायरस चला है, तो आप इस कारण अपने घर के अंदर कैद हो, किसी स्ट्रक्चर के अंदर हो आप आजकल, मीन्स यू आर लिविंग अंडर स्ट्रक्चर. एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है जिस कारण आप कहीं पर रेस्ट कर पा रहे हो, अपनी फैमिली के साथ रह पा रहे हो. Same as technically in language also, if there is structure, that means you are capable of sharing your ideas, framing a sentence pattern. अगर आप perfect structure इंग्लिश का या किसी भी लैंग्वेज में अगर आप एक स्ट्रक्चर की नॉलेज रखते हो, तभी आप उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाते हो. If you see the definition here, structural approach is a scientific study of the fundamental structures of English language, their analysis and logical arrangement. So scientific study है ये. Fundamental structures जो English language के fundamental structures हैं. Once phonetics आपने कर लिया है, and after that grammar is there. Language का जो आपने 3 stream आपको बताए थे, morpheme और linguistic भी आप बोल सकते हैं इसको. Then grammar, and thirdly expression. So in the second phase we are discussing here grammar. Rules आपको पता होने चाहिए, तभी आप एक अच्छा structure frame कर पाओगे. Then structural, this approach is also known as situational approach, structural oral situational approach, and it is alternate or alternative to the direct method of teaching English, where we teach students English directly. We use direct English to English communication and discussion. But structural approach is something about gradation, selection of grading of structures, patterns of sentence and vocabulary. And according to another linguistics, Manon and Patel, the structural approach is based on belief that the learning of a foreign language, mastery of structure is important than the acquisition of vocabulary. So in direct method we focused on acquisition of vocabulary mostly, but here in structural approach we emphasizes on structural pattern or making of proper sentence patterns. So according to Manon and Patel, acquisition of vocabulary is not more than important for learning new language, rather than it is mandatory to get mastery over the various structure patterns. आपको sentence formation आना ज़रूरी है. अगर आप sentence formation बना पाओगे तभी आप vocabulary use कर पाओगे properly. अदरवाइज आपका जो पूरा structure आपका जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा और कोई उसका प्रॉपर मीनिंग नहीं निकलेगा. So here use of direct method is there, means इस मेथड में, इस अप्रोच में, स्ट्रक्चरल अप्रोच के थ्रू आप डायरेक्ट मेथड भी यूज़ करते हो, बट ट्रांसलेशन जो है वो फुली रिजेक्टेड है. You don't translate any structure here. You teach grammar students, but you don't teach them how to translate. And further, if you want more details of gradation, what is gradation? Gradation means grading here
grading structures means putting them in a suitable order to arrange according to their usability and difficulty. For example, if you want to make a simple sentence, so first you have to put the subject, means he or any name. Radha is singing a song, so Radha is here, subject is here, helping verb, and this is simple sentence like this. More knowledge or more example you can see. In this example, Pradhanya is a beautiful girl. This is simple sentence. Is Pradhanya a beautiful girl? And having a interrogative sign here. इस sentence में interrogative sign लगा है. That means it is a question or interrogative sentence. Then a beautiful girl is Pradhanya. It is again a simple sentence. So each and every sentence is giving different meaning, and it has their own structural pattern. And further you can see various types of structure. Number one, sentence structure, phrase structure, idiom structure, routine structure. So sentence structure means subject plus verb. You can see here example, birds fly. If we add here object, then it is sentence plus verb plus object. It is a table. Or if we add here subject plus verb plus consonant, then it is the sun is bright. Comparative degree, subject plus verb plus object. The teacher is subject here, gave is verb here, us and notes, again object here, subject plus verb plus to infinitive, she wants to learn, subject plus verb plus gerund, he begins crying. So these are the various examples of various structure patterns. Let's take another example of phrase structure. The flower is pretty, or the young boy. The pretty flower, it is a phrase. The young boy. The boy is young and as fresh as the flower. Next is idiomatic structure. For example, any idiom. It means all of the sudden in black and white, hast, waste, has, might is right, do good, have good. So these all are the example of idiomatic structure. Routine structure consists of such groups of words which are used by us in a day-to-day conversation or on certain occasion. जब हम अपनी routine structure की conversation की जब हम के लिए हम structure plan करते हैं या normal sentence use करते हैं, that is routine structure. Proper word order is maintained here. Daily conversation example, you can give the example of daily conversation here. So these all are the types of structure. Let's have principles here. Principle of structural method. Speech is basis of acquiring other skills like reading and writing. The speech is emphasized. So while making structure, speech is important here according to this structural approach. As you know, reading and writing is important, but speech is also emphasized here so that you will be able to make structure आप ताकि बना सको. Language habit formation is important. The important of forming language habit. So you must form a language habit among your children, among your students. You must make them write 5 or 6 sentences every day. Make language formation their habit, and give them more practice over sentence making. Activity based learning.
This approach is based on activity based learning, because while you know while speaking and while reading and writing, make them to practice over various structure of the sentences. You have so many structure of sentences, तो आपको बच्चों को जितने भी आपके structures हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उन पे उनको डेली प्रैक्टिस करवाना, या फिर जो आपने कोई कंटेंट पढ़ा है उसमें उनको स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए आप एक्टिविटी के थ्रू बता सकते हो या उनसे पूछ सकते हो. So let's have the characteristics of structural approach. It correlates the teaching of grammar and composition with reading lesson. This grammar is taught informally. So it is a technique where grammar and composition is correlated with reading a lesson. बच्चों को जब लेसन पढ़ा रहे होते हैं तो ग्रामर भी उस समय टीचर कोरिलेट करवाती है, इसमें स्ट्रक्चर बताती है. द यूनिट टीचिंग इज पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. यहाँ पर टीचर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पर एम्फेसाइज करती है वाइल रीडिंग द लिटरेचर पार्ट. ओरल ड्रिल form a significant step of this approach. इस अप्रोच में बच्चों से ओरल ड्रिल करवाई जाती है और बच्चे ओरल ड्रिल के थ्रू भी एक्टिविटी के थ्रू, विच मीन्स एक्टिविटी बेस्ड हैं ये, डिफरेंट जो आपका सेंटेंस पैटर्न है उस पर ओरली प्रैक्टिस कर सकते हैं और करवाती है टीचर. फॉर सेकेंड लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, meaningful situations are created by the teacher. Here a teacher can create meaningful situations, and with the help of that situation teacher can teach them new structural patterns. Teacher can use teaching aids also, various teaching aids, flashcard or a model chart like this. It lays proper emphasis on oral approach method. So as we got to know till now, अब हम जान चुके हैं कि इस अप्रोच के थ्रू जो इंग्लिश है वो ओरल अप्रोच के द्वारा ज़्यादा एम्फेसिस की जाती है. इसमें जो ग्रामर का जो ग्रेडेशन है, यानी कि सेंटेंस पैटर्न बच्चों को बताया जाता है ओरली, देन प्रैक्टिस करवाई जाती है उनसे इन रिटन फॉर्म. ऑल द 4 स्किल्स आर हियर एम्फेसाइज्ड. Let's have merits here. इसके क्या क्या गुण हैं? Speech is emphasized as you know, activity based है ये. So teacher emphasize on the speech. Direct method का ये एक तरह से हम बोल सकते हैं stand करता है. ये approach direct method को support करती है, and in direct method we directly teach the language. So speech is important here. Habit formation is stressed. बच्चों की आदत बना दी जाती है कि वो स्ट्रक्चर को अपनी स्पीच के साथ ही समझ जाएं, और सेपरेट तरीके से ग्रामर सिखाने से के साथ साथ बच्चों को विद इन बुक और कंटेंट के थ्रू ही लैंग्वेज के जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो बताए जाएं. केयरफुली सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड स्ट्रक्चर लैंग्वेज मटेरियल. यहाँ टीचर जो हैं वो बहुत केयरफुली बच्चों को सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बताती है और लैंग्वेज मटेरियल प्रोवाइड करवाती हैं. इट क्रिएट्स इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन इन द पीपल्स थ्रू द यूज़ ऑफ सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड मटेरियल. ग्रेडेड मटेरियल जो है, क्योंकि ग्रेडेड मीन्स टॉप जो मटेरियल है, टॉप क्लास मटेरियल, वो टीचर प्रोवाइड करवाती है, और टाइम टू टाइम टीचर को मोटिवेशन भी प्रोवाइड करना होता है बच्चों को. So because she will teach them new structural patterns every day and their use also. Language is taught in meaningful situation. This approach is linked with the situational teaching. So it is also based on activity and situational teaching also. A teacher teaches the meaning of the structure while creating any situation, while giving them any activity or situation. So बच्चे इसमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग सीखते हैं. Besides oral work, it emphasizes and reading and writing skill. So reading and writing is also emphasized here, as we discussed earlier. So it is very
important approach, structural approach is very important towards learning any target language or foreign language, especially English language. Now let's talk about the demerits कि क्या अवगुण है. What are the flaws here in this approach? A good plan fails without understanding of nature of the language. So directly बच्चों को structure के बारे में बताना it is quite difficult and उनसे expect करना कि वो situation के साथ वो सीख पाएँ, तो वो भी थोड़ा लैंग्वेज के नेचर के अकॉर्डिंग नहीं है. बच्चों को ग्रास रूट से सिखाना बनता है, कैसे नाउन बनता है. सो हेयर बिकॉज ये डायरेक्ट मैटर को सपोर्ट करता है, सो इट प्रैक्टिकल एम्फेसिस इसमें ज़्यादा है, बट थियोरेटिकल जो एम्फेसिस है वो थोड़ा कम है. टेक्स्ट बुक्स प्रिस्क्राइब्ड इन कोर्स कैन नॉट बी टॉट थ्रू दिस अप्रोच. जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो इस अप्रोच के थ्रू नहीं पढ़ाई जा सकती, क्योंकि फिर तो टीचर को पूरा साल लग जाएगा अगर एक सेंटेंस को वो बताती रहेंगी कि यहाँ पर ये सेंटेंस सिंपल है, ये इंटरोगेटिव है. दिस विल टेक सो मैनी मंथ्स. नेक्स्ट इज नॉट हेल्पफुल इन टीचिंग प्रोज, पोइट्री एंड अदर फॉर्म ऑफ लिटरेचर. किसी भी तरह का कि जो पोइम है, प्रोज है, या फिर कोई लिटरेचर का कोई स्पेसिफिक वर्क है, उसको पढ़ाने में ये हेल्प नहीं करता है. नॉट सुटेबल फॉर हायर क्लासेस एज दे डोंट लाइक रेपिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स. अगेन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बेसिक क्लासेस जो इनिशियल स्टेजेस पे सिखाए जाते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है. हायर क्लासेस में इट इज़ रबिश, वेस्टेज ऑफ टाइम है. नॉलेज ऑफ ग्रामर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड through this approach as it touches only the functional grammar. आपने ग्रामर पढ़ लिया है और you know very well what is functional grammar, जो कि हम as a functional activity में यूज़ करते हैं, that is functional. theoretical grammar आपका जो formal grammar होता है उसमें आप proper rules सीखते हैं, but यहाँ पर आपको orally emphasis बताया जाता है कि this is simple sentence, this is negative. So these all are the demerits of this situation structural approach. Okay, now next approach we have here cooperative language learning, means CLL. Cooperative, as the name suggests, while cooperating each another. Education is two-way process where student on the one hand student is there, another hand teacher is there, and third it is three-way process, and third is content. So when English teacher teach students English language with cooperative approach, then it is called cooperative language learning, where a teacher and students joins together, they share their ideas, interact each other, they collaborate with each other, discuss something, or they are just like a community, a group of learners, and they can discuss various things about language, or they can communicate here. So this is about the cooperative language learning, CLL. Technically, it is an educational approach that uses cooperative activities in pairs and small groups of learners in the classroom. Build positive relationship teacher and students, between teacher and students, give students experiences for different types of development, raise achievements to all students, promote communicative interaction in the classroom. So अगर हम इसको simple language में समझे तो cooperative मतलब साथ मिलकर लैंग्वेज इसमें सीखी जाती है. टीचर जो है वो फ्रेंडली एक क्लासरूम में बच्चों के साथ इंटरेक्ट करती हैं और आइडियाज़ एक्सप्रेस करती हैं, बच्चों के आइडियाज़ सुनती हैं. एक कोऑपरेटिव लैंग्वेज लर्निंग यहाँ पर हम बोल सकते हैं. जिस तरह से हम अपने फ्रेंड सर्कल में अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, चैट करते हैं, डिस्कस करते हैं, सेम वे यहाँ पर कोऑपरेटिव लैंग्वेज लर्निंग की जाती है और टारगेट लैंग्वेज या न्यू लैंग्वेज को सीखा जाता है. ओके, नाउ लेट्स discuss about the
theory of this language learning through this approach, which is cooperative approach, and it is based on cooperation, working together to share goals. Learners work together here to maximize their own and uh, each other's learning. So while in a group or in a collaborative form, आपस में मिलकर बच्चे इसमें सीखते हैं. It is founded on premise one, means on the basis of we are born to talk. हम यहाँ लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, मतलब हम हमारा जन्म हुआ है इस थ्योरी पर आधारित है ये. इट इज़ बेस्ड ऑन दिस थ्योरी दैट वी आर बॉर्न टू टॉक. वी आर ह्यूमन एंड वी आर ब्लेस्ड विद द वॉइस, वर्चू ऑफ वॉइस. हम बोल सकते हैं एंड वी कैन टॉक विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज. नेक्स्ट premise is human beings spend a large part of their lives engaging in conversation. बीइंग अ ह्यूमन, हमारा जो मोस्ट ऑफ द टाइम है वो किस में खर्च होता है, स्पेंड होता है या किस में एक्सपेंड होता है, व्यतीत होता है एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करके. लाइफ में हम सुबह उठने से लेकर जब हम सोते हैं तब तक हम जितने भी इंटरेक्शन करते हैं सब कन्वर्सेशन बेस्ड होते हैं. नेक्स्ट इज़ मैक्सिम्स. मैक्सिम्स आर द रूल्स ऑफ ग्रामर. लर्निंग ऑफ these maxims rules and which changes behavior. Maxims in the second language के rules जिनसे कि हम या फिर कुछ principles जिनसे कि हम उस language को सीख सके. इस theory पर ये cooperative learning जो है वो based है language learning की. Now let's talk about the design, how it is designed. Cooperative learning किस तरह से डिज़ाइन की जाती है. इन वाइल सी आपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में cooperative learning आप पढ़ रहे होंगे, बट हेयर इन लैंग्वेज लर्निंग इट इज़ क्वाइट डिफरेंट. बेसिक जो है वो सेम है बट टेक्निक और स्टाइल डिफरेंट है. सो लैंग्वेज लर्निंग में जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं ये किस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं. टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड टू डेवलप कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस थ्रू सोशली स्ट्रक्चर्ड इंटरेक्शन एक्टिविटीज़. हेयर यहाँ पर ग्रुप में कलेक्टिव होकर बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप की जाती हैं बच्चों की, और एक स्ट्रक्चर्ड मैनर तरीके से. द सिलेबस डिज़ाइन किया जाता है. एक्टिविटीज़ फ्रॉम करिकुलम ओरिएंटेशंस कैन बी टॉट वाया कोऑपरेटिव लर्निंग एंड वी कैन cooperative language learning or call used in teaching content class. 4 skills: grammar, प्रोनाउंसिएशन एंड वोकैबुलरी. सो अगर हम लैंग्वेज लर्निंग की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू जो ग्रामर की जो लैंग्वेज लर्निंग की 4 स्किल्स हैं, द बेसिक स्किल्स विच आर known as reading, writing, speaking and listening. Writing यहाँ पर skip की जाती है, listening and speaking यहाँ पर emphasize की जाती है cooperative learning में. Writing भी की जाती है and 4 skills majorly taught here and practiced here. Grammar में जितने भी या pronunciation है या vocabulary है वो इस कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू वर्कआउट की जाती है, प्लान आउट की जाती है. बच्चों को ग्रामर, 4 स्किल्स, प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी इसमें सिखाई जा सकती है. नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग एक्टिविटीज़ हियर. अकॉर्डिंग टू जॉनसन 3 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स हियर. किस तरह की एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर सकते हैं. फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स, इनफॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स एंड कोऑपरेटिव बेस्ड ग्रुप्स. आप 3 तरह के इसमें ग्रुप लर्निंग कोऑपरेटिव ग्रुप बना सकते हैं. फॉर्मल जैसे क्लासरूम में फॉर्मल तरीके से ग्रुप्स बनाकर, इनफॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स आउट ऑफ द क्लासरूम, एंड कोऑपरेटिव बेस्ड ग्रुप्स. डिफरेंट आप टास्क दे सकते हैं उनको एंड टेल देम टू कन्वर्स विद इन अ ग्रुप एंड कोऑपरेट ईच अदर. आप कोई क्विज करवा सकते हैं इंग्लिश में, वोकैबुलरी टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं, सिम्पोजियम, पोइट्री रिसाइटेशन हो सकता है इसमें. ग्रुप कलेक्टिवली आप इसमें करवा सकते हैं कोई भी लिटरेचर या फिर लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी आप कंडक्ट करवा सकते हैं बच्चों से. तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ लर्नर हेयर इन दिस अप्रोच. लर्नर का क्या कार्य रहता है इसमें, रोल क्या रहता है. डायरेक्ट एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन, बिकॉज दिस इज़
cooperative learning, cooperation of teacher as well as student. Peer grouping is the most typical cooperative language learning format. बिकॉज आप अगर पेयर अप कर रहे हो बच्चों को, ग्रुप बना रहे हो, देयर यू हैव टू टेक केयर ऑफ द कैपेबिलिटी, मेंटल लेवल ऑफ द, और इंडिविजुअल डिफरेंस ऑल्सो. ऐसा ना हो कि आपके जो आपने ग्रुप बनाया है वहाँ पर सारे वेल स्पोक्स पर्सन हो या फिर बहुत एक्टिव हो जिनकी लैंग्वेज में अच्छी कॉम्पिटेंस है, बट आपको हर टाइप का बच्चा एक ग्रुप में इन्वॉल्व रखना है. और नेक्स्ट इज़ रोल्स ऑल्ट्रेशन. आप जो आपको लगता है कि बहुत जल्दी पिकअप कर रहे हैं लैंग्वेज को, या फिर कई बच्चे जिनका रोल जिनको नहीं कंफर्म हुआ है या खुद को पीछे खींच रहे हैं एक्टिविटी में या कोऑपरेटिव लर्निंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, उनको आप ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकते हैं. और जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं उनको थोड़ा अल्ट्रेशन कर सकते हैं उनके रोल को, उनको थोड़े कम ग्रुप में थोड़ा कम रोल कर दे सकते हैं उनको. सो दिस टाइप्स ऑफ रोल रह सकता है लर्नर्स का इस अप्रोच में. ओके, नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर हियर इन दिस अप्रोच? टीचर क्रिएट्स अ लर्निंग हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम. टीचर का रोल रहता है क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है उसको वेल ऑर्गेनाइज रखें, अच्छे से बच्चों का ग्रुप फॉर्मेशन करें, एक प्रॉपर प्लान आउट करें कोई भी एक्टिविटी कोऑपरेटिव लर्निंग में जो आप यूज़ कर रहे हैं लैंग्वेज लर्निंग के रिगार्डिंग. अगर आप इनेक्ट करवा रहे हैं या कुछ और कंपटीशन कनेक्ट करवा रहे हैं तो उसमें प्रॉपर ग्रुप्स बनाए जाएं. एस्टैब्लिश द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द क्लासरूम, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट. इफ़ यू आर टेकिंग स्टूडेंट्स टू लैंग्वेज लैब देन प्रॉपर अरेंजमेंट ऑल्सो शुड बी देयर. असाइनिंग स्टूडेंट्स टू ग्रुप एंड रोल्स. बच्चों को अगर आप एक्ट या प्ले करवा रहे हैं तो उनको ग्रुप्स में जो रोल्स हैं वो असाइन करना प्रॉपरली. मटेरियल और टाइम पीरियड को सेट करना, कितनी ड्यूरेशन रहेगी. फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, बच्चों को एज अ फैसिलिटेटर एज अ गाइड वहाँ पर ट्रीट करना, उनके साथ फ्रेंडली रहना. एंड मूव अराउंड द क्लासरूम एंड हेल्प स्टूडेंट्स एंड ग्रुप्स. अगर आप कोई किसी और तरह की मटेरियल मेकिंग या फिर कुछ और तरह की एक्टिविटी देते हैं तो बच्चों को विद इन क्लासरूम उनको गाइड करना, और ग्रुप के विद इन ग्रुप के अंदर भी बच्चे हैं उनको आपस में कोऑपरेशन सिखाना. गिविंग फीडबैक, बच्चों को फीडबैक देना, क्वेश्चंस पुट करना, इनकरेज करना, एंड उनकी जो प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम थिंकिंग, उनको मेमोराइजेशन कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है या फिर कोई और सेल्फ या इंडिविजुअल डिफरेंस से रिलेटेड, इंक्लूजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसको टैकल करना. एंड लेस स्पीकिंग एंड डिसिप्लिनरी कंट्रोल. ऑफ कोर्स ऐसा ना हो कि टीचर अगर कोऑपरेशन या कोऑपरेटिव लर्निंग लैंग्वेज लर्निंग के थ्रू कई बार मैस भी क्रिएट हो सकता है, बहुत ज़्यादा हाइपर हो सकते हैं कई स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा नॉइस हो सकता है. सो वो जो डिसिप्लिन है दैट शुड बी मेंटेन्ड ऑल्सो. एंड कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको डायग्नोस करना एंड रीस्टार्ट करना या डिसमिस करना. इट इज़ ऑल अबाउट द टीचर्स रोल. So to conclude, or merits of this approach is like it improves both learning and learners' interaction skills. Activities can be used in collaboration with the other teaching methods and approaches you can use while using this approach. Various methods, आप और methods भी use कर सकते हैं इस approach के लिए. Then COLL helps the teacher to build positive relationship among students. बच्चों के साथ अच्छे रिलेशनशिप यहाँ पे बनते हैं टीचर के. सेल्फ लर्निंग भी यहाँ पे आती है, मोटिवेशन प्रोवाइड करवाना. इट प्रोवाइड्स मोटिवेशन, सेल्फ लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, then cooperative writing can be here, cooperative conversation can be here in English classroom, cooperative editing and pairing can be also there. So here students learn so many things.
another approach we have here in teaching of English, linguistic approach. As we have already discussed linguistic, its meaning in detail. हमने linguistics को बहुत डिटेल में पढ़ लिया है पहले भी, and you can express it in your own words, and while taking help of those notes. A linguistic approach is a teaching method which assumes children in the class who participates have a strong grasp of their mother tongue, oral language, which is then used as an acoustic or associative learning tool for words and spelling patterns. See, you know that what is linguistic? Linguistics, a study of symbols, systematic study of symbols and phonetics. We already discussed it, and we know the linguistics of our mother tongue, which is Hindi, same as if we are learning any foreign language. So we have to apply the same approach as we learned Hindi language. मतलब जिस तरह से आपने हिंदी लैंग्वेज को लिंग्विस्टिक अप्रोच के थ्रू सीखा है, उसी तरह से आपने इंग्लिश लैंग्वेज को भी बच्चों को लिंग्विस्टिक अप्रोच के थ्रू सिखाना है, जिसमें बच्चों को पैटर्न, स्पीच, साउंड, अल्फ़ाबेट्स, स्पीच ऑर्गन्स एंड एवरीथिंग यू हैव टू टीच देम. कहाँ किसका कैसे यूज़ किया जाता है, यू हैव टू टीच देम. पहले जिस तरह से हमने इमिटेशन करके सीखा है इनिशियल स्टेजेस पे हिंदी को, for language learning, foreign language learning, we also apply the same method or approach, which is linguistic approach, just like we learned Hindi. Okay, language form, language meaning, and language in context is the main aspects here. लैंग्वेज का निर्माण किस तरह से हुआ, मीनिंग क्या है लैंग्वेज का, एंड किस कॉन्टेक्स्ट में वी आर यूजिंग इट. सो पाणिनी फर्स्ट, यू नो, अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो पाणिनी was the first student of linguistics with analysis of Sanskrit in Ashtadhyayi. So in Ashtadhyayi, Sanskrit language, he learned or he focused on linguistic approach. And here in English language also you can apply this linguistic approach. For this you have to go in detail language form, language meaning, and language context. You have to teach each and everything to new learner, new foreign language learning. Being an English teacher, you have to teach them how the language, English language formed, and about its system, phoneme, rules, and further language meaning and the context they are using. So today we learned about the 3 approaches given in your syllabus: cooperative learning, linguistic approach, and of course your first approach, structural approach. Revise it, learn it. If there is any problem, ask me again. So for today's assignment, you have to make assignment on these 3 approaches. What is structural approach of teaching English? What is cooperative approach, cooperative language learning of English? And what is linguistic approach in English language teaching?